Dear all, welcome to Civil Services with ZAKI, and today we are very glad to share with some good news with you because in this year also 21 question directly asked from Civil Services with ZAKI, whether it is our YouTube channel or whether it is our app or our specific blog. So, as you know, this year about 44 questions asked directly from basically directly from the ecology, environment, science and tech and geography, in which if you differentiate with these three subjects, it means ecology, environment, geography and science and tech, then 18 question directly from geography, 18 question directly from ecology and environment and 8 question from science and tech. So we will discuss all these 44 question in this video and upcoming video because as you know, like previous year, we first discuss about the directly asked from our civil services with ZAKI. So this year 21 question directly asked from our YouTube channel or blog. So we first discuss all these 21 question in the part first. So it is our part first. So part first and part second, I hope we will provide a part second video in next वीक. तो आप सभी का सिविल सर्विसेज विद ZAKI में स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको कई तरह के करंट अफेयर्स देते हैं, खास करके विज्ञान में, ज्योग्राफी में और आप देखते हैं कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में. तो इन सब को मिला के अगर हम देखें तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है, एक हर्ष के साथ आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है. और हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, क्योंकि जो इसमें मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, और हमको बहुत ही खुशी भी होती है अपने स्टूडेंट पे कि कुछ स्टूडेंट जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन शाम में कुछ स्टूडेंट ने भेजा कि सर देखिए ये आपने कहा था और देखिए ये आ गया. तो मैं चाहता हूं कि और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो भी, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन गेस करना कोई मामूली बात नहीं है और 21 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाना 44 में, यानी बाकी जो 23 बचा है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, 21 जो है वो हम अभी इस वीडियो में देंगे. तो चलिए हम लोग बगैर रुके हुए देखते हैं एक एक करके, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है और मैं आप लोगों का टाइम नहीं लेने वाला हूँ, चूँकि मैं जो आपको सामने प्रोवाइड करूँगा तो मैं शुरू में ही कहा था कि जैसे मैं कोई वीडियो बनाता हूँ और उससे आपका क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि ये देखिए ये आपको क्वेश्चन इस वीडियो से आया. और इस बार तो बहुत ही आश्चर्य है और बहुत ही एक सुखद आश्चर्य हो रहा है, खुशी हो रही है हमारी कि हमारा सिर्फ एक वीडियो इंडियाज हाइड्रोजन मिशन, ये वीडियो आप देख लें, इस वीडियो से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन पे भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए चलते हैं. तो ये पार्ट फर्स्ट है और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ यूपीएससी पीटी इंग्लिश हिंदी, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे. अ टोटल 21 क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम आवर channel, in which if you differentiate in the subject bias, so geography 12 question direct, and in ecology environment 5 question, and science and tech 4 question. So if you calculate the total, so it's total 21 question. So from ecology environment geography, so we move and see first question, and first we start with the geography. Geography. So first question, consider the following statement: Jhelum river passes through the Wooler Lake, Krishna river directly feed Kelleru Lake, and meandering of Gandak river formed in Kanwar Lake. How many of these statements given above are correct? Only one, only two, all three, none. अब चलिए इसको हिंदी में देखते हैं. तो हिंदी में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है, उसी तरह से कृष्णा सीधे कोलोरू, इसमें कह रहा है कि सीधे कोलोरू, और गंडक नदी
के विसर्पण यानी जिसको मिएंडर कहते हैं, कंवर झील का निर्मित हुआ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहला सही है, यानी जो आपका झेलम है वो वूलर से होके जाती है, बिल्कुल सही है। कृष्णा सीधे केलेरू नहीं, ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में केलेरू झील है, वो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अनदर थर्ड इज गंडक नदी विसर्प से करती है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। गंडक नहीं करती है, क्या बूढ़ी गंडक है, और बूढ़ी गंडक और गंडक में, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसीलिए मैं थोड़ा सा देख रहा था, तो 90% जो भी बड़े बड़े कोचिंग है सारा इसका बी आंसर दिया है और वो गलत आंसर है। तो इसका आंसर होगा आपका ए आंसर। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर lake in the South Asia. Also, Koloru Lake located between the Krishna and Godavari Delta and cover an area of 308 square kilometers. So the lake is serves as a natural flood balancing reservoir. And another is Kamartal or Kavartal Lake is the wetland, and as you know it is recently basically included in the Ramsar site, and in present day about 75 sites basically included in the Ramsar sites. So it is also Asia's largest freshwater oxbow lake, Kavartal, formed due to the meandering of Buri Gandak, not Gandak. Gandak and Buri Gandak is different. So if you want to know more about that, then you must watch our specific video on अपवाह तंत्र। असल इसको हम हिंदी में बनाए तो इसको आप देख सकते हैं, अपवाह तंत्र एनसीईआरटी सीरीज, और ये अभी तक हिंदी में हमारा एनसीईआरटी सीरीज है। वी सून स्टार्ट एनसीईआरटी सीरीज इन इंग्लिश, एंड इफ यू वांट टू वी सून स्टार्ट एनसीईआरटी सीरीज इन इंग्लिश, then write your write comment box yes or no. Then we move forward and see the map of these. Basically this question is related to the map work, so we soon start map, but date and time decided by you, our subscriber. So let's, तो अब मैप क्लास जो हम शुरू करेंगे ये आपके द्वारा तय किया जाएगा, और मैंने कम्युनिटी में भी दे दिया, हर जगह फैला दिया है। अब आप वोट करें कि ये कब देंगे और कौन सा टाइम देंगे, ये आप तय करेंगे, क्योंकि ये आपका क्लास है, आपका चैनल है। तो चलिए देखते हैं मैप। ये देखिए, ये क्या है, ये है आपका, यहाँ देखिए वूलर झील, और ये आपका झेलम रिवर यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा ये देखिए, ये है कोलोरू लेक। अब ये कोलोरू लेक अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु रिवर है और उसके बीच में ये है, और इधर आप देखेंगे तो कृष्णा इधर है और गोदावरी है उसके बीच में है। यहाँ पे अगर आप इसको इनलार्ज करके देखें तो ये, और इसको इनलार्ज करके देखें तो ये है आपका, आप देख लिया कि ये है आपका कोलोरू लेक। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का जो कंवर झील है उस पर भी चलता करते हैं। तो ये देखिए कंवर लेक, ये यहाँ मिएंडर पे बना, कहाँ, बिहार में बेगूसराय के पास ये बना, ये वेटलैंड साइट में हुआ। और जो जैसा कि मैंने बताया कि सो कॉल्ड बड़े बड़े कोचिंग है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गंडक को ही सही मान लिया, जबकि गंडक और बूढ़ी गंडक में फर्क है। आप देखिए यहाँ मैप से ही आपको पता चल रहा है, दोनों में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है। दूसरी बात और मजे की है, ये देखिए यहाँ गंगा से मिलता है और ये यहाँ पे आके भागलपुर के पास गंगा से, तो मतलब अब आप यहाँ देखिए, यहाँ गंगा से मिलता है और यहाँ से मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये उसकी ट्रिब्यूटरी भी नहीं है, यानी बूढ़ी गंडक गंडक की ट्रिब्यूटरी भी नहीं है। यहाँ बूढ़ी गंडक है और यहाँ बूढ़ी गंडक है और यहाँ गंडक है, तो गंडक और बूढ़ी गंडक किसी भी हालत में एक दूसरे से अलग है, इतना आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए, सो वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ilmenite and rutile abundantly available in the southern coastal tracts in India are rich sources of which of the following? Aluminium, copper, iron and titanium. So इसको हम हिंदी में देखते हैं। भारत कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में किसके समृद्ध स्रोत है? टाइटेनियम। तो इसका सही जवाब है
टाइटेनियम, ये मैं अपना क्लास लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को, जब इंडिया का मिनरल पढ़ाया था, मिनरल रिसोर्सेज, तो उसमें बताया था आपको। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो बीच है उसमें 11% वर्ल्ड इल्यूमिनेट्स आयरन ऑक्साइड्स मिनरल्स मौजूद है। इल्यूमिनेट इज द प्राइमरी ओर ऑफ द टाइटेनियम, metal that used to make high performance alloy. Indian Bureau of Mines stated 90% of the world titanium mineral produced is used to manufacturing titanium dioxide pigment. So आप इसको देख सकते हैं, और as you know it is our lecture on the mineral resource, so you can watch my this video on Super Study IAS live video section and all that. So next we move second question, and actually third question from geography and 8th question from set A. So numbering here basically indicate the set A of UPSC examination. So set A. So which one of the following part of the Congo basin? So which one of the following is a part of the Congo basin? So as you know, some day earlier we discussed about the new map and Congo basin and all that. So that's why this question is also a surprise. So pleasant surprise. So Congo basin. So Cameroon, Nigeria, South. So answer is the Cameroon. So see here, निम्नलिखित में से कौन सा कांगो बेसिन का भाग है? कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, तो इसमें कैमरून है। तो मैप क्वेश्चन, सो इट इज रिलेटेड टू मैप। कांगो बेसिन इज द सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ द कांगो रिवर, कांगो रिवर द्वारा बनाया गया, और इसमें 10 कंट्री है। 10 कंट्री कौन कौन सा है यहाँ देख लीजिए, एंगोला, गैबन, ब्रुंडी, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसी तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा, तंजानिया एंड जाम्बिया। सो फॉर मैप क्लास यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, because map is a tool of easy understand some of the world main places in news, and this year about 5 to 6 questions directly asked from this map series. So that's why map series is very, very significant. We move forward and see here. See, this is Congo basin and this is all 10 countries. Let's move forward and see. Consider the following. Amarkantak Hill are the confluence of Vindhya and Sahyadri range. Belgranian hills constitute the easternmost part of the Satpura range. Shishalam hills constitute the southernmost part of the Western Ghat. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three, none. So answer, first we go answer is D, none. अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री के बीच में है, तो ये गलत है। आप जानते हैं विंध्य और सतपुरा है, सह्याद्री नहीं है। बिलिग्राम पहाड़ियां सतपुरा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है, ये भी गलत है। और शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग है, ये भी गलत है। तो इसका कोई नहीं है जवाब, डी आंसर है। तो चलिए देखते हैं, इसका डी आंसर है। सो अमरकंटक इज द कन्फ्लुएंस बेसिकली हियर के सतपुरा एंड विंध्य, नॉट सह्याद्री। Biligram's Hills is situated in the western Karnataka and border between the Tamil Nadu, so it is not near the Satpura range. And Sheshchalam Hills, hilly range in the eastern Ghat, not the western, near Andhra Pradesh. So see here, if we see map, so here Amarkantak and here Biligram, it is the, yeah, it's here. And here Sheshchalam. So these all pairs are not correctly matched. So fifth question, with the reference of India project on connectivity, consider the following: east-west corridor and trilateral highway and Bangladesh and China. So basically it is also related to the map. So trilateral
It's project Dibrugarh to Surat. Not Dibrugarh, it's Porbandar to Silchar. So this is wrong. This is Moreh in Manipur and Chiang Mai. It's also wrong. So this is also wrong. Bangladesh-China-Myanmar corridor, Varanasi, not Varanasi, from Kolkata. So this is, so for answer D. स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में है, वही है। तो हम वक्त को बचाते हुए, आप लोग का भी वक्त न लगे, हम चलते हैं। हम लोग तो डिस्कशन कर ही लेते हैं, आगे चलते हैं। सो बेसिकली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH70 पोरबंदर टू सिलचर 27, and it is Myanmar, India, Thailand, Moreh in Manipur, and Mao Soets in Thailand. In Bangladesh, China, so it is basically from connecting the India and China, Myanmar, Bangladesh corridor. So see here, mapped. So see here more to Thailand is trilateral, India, Myanmar, and Thailand. Another is, it is common to Kolkata. Consider the following country: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania. How many of the above mentioned country land border with the Ukraine? Only 2, only 3, only 4, only 5. Answer here is only 2. So if we see the Hungary and Romania directly land border with the Ukraine, and Bulgaria, this is Latvia and Lithuania. So this question is also related to so land boundary of the Ukraine. So 7 countries: Russia, Belarus, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, and Moldova. So for more detail about the map class, please join our smart map class and download our app. We move forward and see another thing. Map. This is Ukraine, Belarus, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova, Russia. With the reference of that Earth atmosphere, one of the following statement is correct. The total amount of the insolation received in the equator roughly 10 times receive of the poles. It's wrong. Infrared constitute roughly 2/3 of insolation. Wrong, because insolation is mostly short wave radiation, which basically include short wave radiation, ultraviolet rays, high energy infrared rays, visible lights, and all that. So this is also, so infrared was largely absorbed by water vapor, and basically that is considered in the lower atmosphere. Yes, it is right. Infrared wave a part of visible spectrum? No, infrared is not a part of the visible spectrum. I hope some of the students know very well, our student, because we show you the electromagnetic spectrum in our regular class. So if you want to join our regular class, then most welcome. Okay. Infrared absorbed by, so you can see our 2 video, insolation and composition of atmosphere, which is available on our YouTube channel. You can verify it. So see here, this 2 video is very significant, and in future, in basically 2024 and 25, maybe some question asked in this video also. Let's 63. Consider the following statements. Soil in tropical rainforest is rich in nutrient. Statement 1. Statement 2. The high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organism matter in the soil to decompose quickly. Yes. Statement 2nd is right. First is wrong. Not rich in nutrient. It is less rich in nutrient. That's why if you see some of the grassland or the grass and etc. are not well developed in the tropical rainforest. And also high temperature and moisture in the tropical rainforest cause dead organism.
so decomposed soil. So that's why if you go to the tropical area, then soil easily develop very rapidly. So it means statement first is wrong, second is right. So answer is statement first is correct, but statement second statement first is incorrect and statement second is correct. So answer is your D. तो यही है जो मैंने अभी बताया इंग्लिश में, वही हिंदी में है कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें न्यूट्रेंट जो है मतलब पोषक तत्वों से भरपूर होता है, तो नहीं, ये पोषक तत्वों की कमी होती है। लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ आर्द्रता और ताप की वजह से वो ज़्यादा डिकम्पोज होता है, अपघटन जिसको आप बोलते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा, वही हमने यहाँ आपको दिखाया है। और ये हमारा जो वीडियो था हाउ टू टेर एंड पेरेंट मटेरियल इन टाइम इफेक्ट द सॉइल, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से कहाँ का क्लाइमेट कैसे कैसे उसको करता है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, हाउ डू पेरेंट मटेरियल, किस तरह से स्लोप, किस तरह से क्लाइमेट इस पे इफेक्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। So let's move forward. Consider the following statement: temperature contrast between the continent and ocean is greater during the summer than in the winter. The specific heat of the water is more than that of the land surface. So both statements are correct. And first statement is the correct explanation of the second statement. So your answer here is A. As you know, our student well aware about that, how land and sea contrast differ from each other, and what are the four type of the major properties of the land and ocean which include this type of the different. So one of the most is the specific heat. So water contain a specific, more specific heat, and land contain less specific heat. That's why this answer of this question is A. तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, क्योंकि इसका जो विशिष्ट ऊष्मा है आप देखेंगे तो वो पानी की ज़्यादा होती है। तो वही है, इसमें आप देखेंगे हमने एक वीडियो बनाया था वाई कॉन्टिनेंट कंडीशंस, व्हाट कंडीशंस कॉज एरिड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट कैसे होता है, किस तरह से उसमें, तो मैंने एक क्लाइमेटोलॉजी पे भी वीडियो बनाया, तो वो सारा वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एक तो ये था व्हाट कंडीशन, ये मेजर ज्योग्राफिकल, तो मेजर ज्योग्राफिकल कंसेप्ट में भी काफ़ी वीडियो है, 300 से ज़्यादा वीडियो अब आपके पास मौजूद है हमारे चैनल पे। आप जाके देखिए, आप तैयारी कीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़िए, और जो बेसिक चीज़ है ज्योग्राफी में वो सारा मेजर ज्योग्राफिकल कंसेप्ट में मैंने दे दिया है, यानी प्रमुख भौगोलिक अवधारणा। ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं इंग्लिश में, ये हिंदी में भी अवेलेबल है हमारे चैनल। Consider the following statement in the seismograph. P waves are recorded earlier than S waves. P waves is individual particle vibrate to and fro, and the directions of the wave propagation, whereas the S wave in the particles vibrate up and down right angle, so vibrate. So if we see the if you see the P waves work like a spring, and S waves like this type of waves. So statement 2 is correct, and statement 1 is also correct, because P waves record earlier and S wave. So if you want to know more about how these recorded, so you can watch our specific video on earthquake. तो देखिए इसमें है क्या कि भूकंप लेखी जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, वो एस से पहले आपको पी का माप करता है। ये मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में, मतलब जो हमारा वीडियो है अभी भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आप देखेंगे कि अलग अलग है, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर सी है। तो इसका आंसर सी है। और व्हाट इज एन अर्थक्वेक, तो आप देखेंगे, और ये वीडियो है आपका, ये देखिए, इसमें आप जाके देख सकते हैं। So let's move forward and see the next question. 93. Consider the following pair. Reason often mentioned in news. So this question is also related to our map work. Reason being in news: North Kivu and Djibouti, war between Armenia and Azerbaijan.
wrong. Nagorno-Karabakh insurgency, no, it is Nagorno-Karabakh between the Armenia and Azerbaijan. Kherson and Zaporizhzhia, dispute between Israel and Lebanon, no, it is basically in Ukraine. So how many of the above pair are correctly matched? None of the above pair is correctly matched. तो वही दिया गया है जिसमें मैंने कहा उत्तरी की और ये आर्मेनिया, अजरबैजान, नगोर्नो-काराबाख जो है वो आर्मेनिया के पास है, और आप देखेंगे खैरगन और वारस्पेजिया, तो ये जो है वो इजराइल और लेबनान के बीच में नहीं है, ये कहाँ है आपको यूक्रेन में। तो इस बार एक चीज आप देखेंगे, यूक्रेन से बहुत क्वेश्चन पूछा है, ये भी आज इस बार की खासियत है। तो जो युद्ध चल रहा है या जो कहीं हो रहा है तो करंट पे आपको बहुत फोकस करना पड़ता है, और ये मैंने शुरू में ही अपने बच्चों को जब मैं लेक्चर में देता हूँ तो बताता हूँ कि पीटी कुछ नहीं है, पीटी में आपका अवेयरनेस चेक करता है, और ये अगर आप अवेयरनेस है तो आप आराम से पीटी निकाल लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो map question. So Kivu and Turi is conflict between Eastern Democratic Republic of Congo, DRC. Nagorno-Karabakh conflict ethnic territory Armenia and Azerbaijan, and disputed and Kherson and Mozambique in Ukraine. So all these basically pairs are wrongly matched. So that's why map is very important. So join our map class. So let's we forward and see this. This is Turi and North Kivu, Democratic Republic of Congo. Another is Nagorno-Karabakh, Armenia and Azerbaijan. And this is Ukraine, and basically this is basically conflict. तो ये आप देखें तो ये यूक्रेन और जो रूस का है उससे बहुत क्वेश्चन इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा। सो लेट्स वी मूव सी द सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग a pair area of the conflict mentioned in the news. Country we are located: Donbass, Syria, wrong. Kachin, Ethiopia, wrong. Kachin, Burma. Donbass, it's also situated in Ukraine. So Ukraine, you know Ukraine, lots of questions directly asked from. And Tigray in North Yemen, no, it's Ethiopia. So answer is D. तो इस तरह से देखेंगे इसमें भी यही है, वो जो है तो इसका आंसर है कि कोई नहीं, इसमें सब गलत दिया हुआ है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं इसमें। तो ये मैप पे क्वेश्चन है और आप ये मैप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैप देखते हैं इसको। तो ये देखिए मैप, ये देखिए ये कहाँ है, यूक्रेन। यूक्रेन में ये डॉट्स, जैसे मैंने बताया कि यूक्रेन से काफी क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस इज कांची, बर्मा, एंड दिस इज टिग्री, इथियोपिया। So these all three pairs are not correctly matched. Now we move forward. So these are the total 12 questions in geography which directly asked from our civil services with ZAKI, from app and map classes. So that's why map class is very very significant. So please join our map class. It's absolutely free for you. First, but date and time decided by you. So let's we move forward. तो चलिए हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दूसरा सेक्शन, सेकंड सेक्शन related to the ecology and environment. So ecology and environment. So first question, ecology and environment is 18 question. Consider the following statement. Some microorganism can grow in the environment with temperature above boiling point. Yes, right. Some microorganism can grow in environment temperature below the freezing point, and some microorganism can grow highly acidic below the 3. Yes, right. Below the 3, it's 0.01. So it's all 3 is right. So answer is C. तो 18 का वही है कि सूक्ष्म जीव जो है, अब देखेंगे क्वाथनांक जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी काफी गर्म में भी इवन जो न्यूज, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारा चीज न्यूज से ही और मैप से ही आपको ये पूछा जाता है। तो ये जो चेरनोबिल वाली घटना हुई थी उसमें जो
दुर्घटना के बाद कई ऐसे माइक्रोब्स थे कि उतनी गर्मी में वो यानी बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा वो होते हैं, जिसको एक्सट्रीमोफिल कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं एक्सट्रीमोफिल होता क्या है। So basically, extremophile archaea is the main group of thrive in extreme environment. Although member of this group is generally less versatile, bacteria and eukaryote. So these bacteria are surviving different type of the extreme conditions. Some are hypothermophilic, some acidophilic, some alkalophilic. So all that. So for example, if you see 122 degrees C survive this type of bacteria, and also some bacteria can survive highly acidic 0.06 pH. That's why these type of the microorganism called extremophile organism. Another 20 question. Aerosols, foam agent, fire retardant, lubricant. In the making of how many of the above hydrofluorocarbon used? Only one, only two, only three, all four. It's all four. D answer. तो 20वां का है कि एरोसोल्स, फोम, ये स्नेक, लुब्रिकेंट, ये सारी चीजें जो है वो कैसे आपका ये है। तो ये आप देखेंगे कि ये जो है सो इसमें सभी 4 में ये होते हैं। तो इसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका है जिसको कहा जाता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। बेसिकली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर द ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल केमिकल्स primarily used in the cooling and refrigeration. HFCs were developed to replace the stratospheric ozone depleting substance that currently being phased out under the Montreal Protocol, and substance deplete the ozone layer. It means CFC, chlorofluorocarbon. So basically hydrofluorocarbon basically used in the place of the chlorofluorocarbon. That's why these type of the chemicals are concerned among the environmentalists. So we discussed earlier, we discussed all these type of the what is Montreal Protocol and all that in our specific video related to the weather, whatever happened to the ozone hole. So you can see this video. So and you can watch this video whatever happened to the ozone hole. So you can find what is Montreal Protocol and what is chlorofluorocarbon and all that things. Let's we move forward and see third question, 60 question, with the reference of the green hydrogen. So here is interesting, our India's hydrogen missions, directly 2 questions from one video. That's very significant for you, and also I'm very glad to share with you only one video contain 2 questions, direct question in PT this year. So see here, it can be used directly as a fuel of internal combustion engine. Yes, it can be blended with the natural gas used for fuel, heat, power generation. Yes, it can be used the hydrogen fuel cell in the run vehicle. Yeah, it's versatile. So answer is all 3C. हरित हाइड्रोजन के बारे में कहा गया है, जिसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो उसके बारे में ये सारी चीजें हैं जो ईंधन के रूप में हम लोग जानते हैं, और इसमें ये सारी चीजें हैं, इसमें आप कंबस्टन में भी लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। और इसको मैंने विस्तार पूर्वक भारत का हाइड्रोजन मिशन, इंडिया हाइड्रोजन मिशन में बताया हूँ, कैसे इसको स्टोर आप कर सकते हैं, वो सारा चीज मैं आपको बताया हूँ, पूरा आप देख सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाइड्रोजन कैन ऑल्सो फ्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो द यूनाइटेड स्टेट एक्सटेंसिव नेटवर्क अप्रोक्सीमेटली millions miles of the gas pipeline, so it's also blended in gas pipeline and lower emission using the. So all these you can watch our this video, India's hydrogen energy mission. This video made for you in 2021 IAS PTA special video. And in this video, because this video is why very significant,
UPSC 2023 2 question directly from this video. So let's we move forward and see another question. Consider the following activity: is spreading finely ground basalt rock in the farmland extensively, increasing the alkaline of the oceans by adding lime, capturing carbon dioxide released by the various industries and plumbing into the subterranean mines in the form of carbonated water. How many of the above activities are often considered and discussed for the carbon capture and sequestration? Only one, only two, one, all three. Answer is C. तो उसी को हिंदी में बताया गया है कि किस तरह से ये किया जाता है, और ये टेक्निक मैंने बाकायदा आपको बताया था. सो लेट्स वी सी आंसर सी. वॉच माय वीडियो सेक्शन. इसमें आप एक सेक्शन पे जाएंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक CDR. व्हाट इज द carbon dioxide removal technique? If you go to this section, then you find exclusively with animation and figures all this. So the video name is Geoengineering is Still Dangerous, and you can find this video on our channel till today. So see here, this video you can say. So this is carbon, this is basalt, and all that things in alkaline, and all that thing we discussed in this video. So that's why these are the one of the most significant comprehensive question analysis for you. And basically if you are preparing for 2024-2025, then you must subscribe our channel and tell your friends, and please share this video. So let's we move forward and see another question. Another is the last question of the ecology and environment section, and after that we move to the science and tech question. Consider the following heavy industries: fertilizer plant, oil refinery, steel plant. Green hydrogen is expected to play a significant role in decarbonizing how many of the above industries? All. Answer C, all. If you see our India's hydrogen mission video, initial first part, we discuss all these things. Why we need hydrogen fuel, why we, because the solar, if you use solar panel and other thing, you need such type of the huge battery. But here in green hydrogen you don't need this type of the battery. So तो हम आपको शुरू में ही ये बताए थे, ये वीडियो अगर हम देखेंगे जो है, तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि ये बड़ी खुशी की बात है, ये आप लोगों का भी सपोर्ट है कि मैं ये बनाता हूँ वीडियो, और ये यूपीएससी में पूछा जाता है. तो एक वीडियो से 2 क्वेश्चन. आप बताइए, आप कितने चैनल पे देखते होंगे 100 वीडियो बनाते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आता. 3 घंटा का वीडियो, मैराथन दौड़ रहे हैं साहब, तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है. और यहाँ सिर्फ मैं एक वीडियो बनाता हूँ 25 मिनट 30 मिनट का, उससे 2 क्वेश्चन आपके पीटी में आ जाते हैं. तो आपको क्या चाहिए, आपको किधर जाना चाहिए, ये आप खुद तय करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा. तो चलिए लेट्स वी मूव फॉरवर्ड एंड तब चलिए देखते हैं. तो वही हिंदी में है, और उसको भी जैसा कि मैंने बताया, ये इंडियाज हाइड्रोजन मिशन, और ये जो वीडियो है यही वीडियो. इस वीडियो को मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, और ये काफ़ी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा. अगर आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको आंसर मिलेगा. इसमें मैंने और सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आ गया तो आप 25 और 24 में नहीं आएगा, 2024 में भी आएगा, 2025 में आएगा, इसको आप ज़रूर देखिएगा. तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है साइंस एंड टेक का. साइंस एंड टेक. फर्स्ट क्वेश्चन है 53. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: कार्बन फाइबर यूज्ड in the manufacture of the component used automobiles and aircraft. Carbon fiber once used cannot be recycled. Which of the above statement is correct? Statement first is correct. Statement second is not correct because it is recycled by various process. So which of the above statement is fair correct? So only one.
Your answer is A. Answer is A. Carbon fiber material consisting thin, strong crystalline filament of the carbon, basically essentially atom bound together in long chain, and the fiber extremely stiff, strong, light, and basically used in the vehicles, performance of the vehicles, used in the many process of the create excellent structure. So carbon fiber recycled in many ways. It's recycled by many ways. This process consists breaking down of the carbon fiber waste, carbon fiber enrichment polymer contained into teeny pieces by crushing, shredding, milling, or other similar type of process. So if you want to see about this news basically published on our blog, Current Affairs for UPSC by ZAKI. Now, as you know, our blog is also the same name, Civil Services with ZAKI. So here you can see the various process of the recycling of the carbon fiber. So carbon fiber can recycle. Another question. See here. See, if you go to our blog, you can see these type of the carbon fiber, carbon nanotubes. So see here. See here. You can find detailed analysis of this. So this is my blog. So you can Civil Services with ZAKI. So you can find various news which really beneficial for you. So don't go to the street and all that and go here and there. You simply follow our blog, subscribe our channel, and you get most of the solution in the ecology, environment, science, and tech and geography. So let's we move forward. चलिए हम आगे चलते हैं और 56. Consider the following pair: object in space and description. Cepheids, giant cloud of dust in space. No. Nebulae, stars which brighten and dim periodically. No, it's pulsar. Neutron star are formed when massive star out of the field. Yes, it's right. So if Cepheids are, if you basically stars which brighten and dim periodically, nebula is the, so it's exchange each other. As you know, when we conduct test, we also exchange. So that's why our test pattern and UPSC pattern is same. So much of the you don't join our this year test, but if you are appearing 2024, then you must our test, join our test. So let's this is only one A. तो वही है सेफाइड्स के बारे में कहा कि निहारिका, नेबुला जिसको निहारिका कहते हैं वो, तो इसमें उल्टा कर दिया है। ये अंतरिक्ष में धूल कण, ये हम लोग जानते हैं निहारिका, हम कहते हैं नेबुलर डस्ट। बताया नेबुलर हाइपोथेसिस आप लोग को बताया है, बच्चे लोग जो हमारे होंगे वो जानते होंगे, जब मैं आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ। एंड सेफाइड्स जो है ये तारे हैं जो आवर्ती रूप में आप देखेंगे तो जलते बुझते रहते हैं इस तरह से, और पल्सर जो है वो न्यूट्रॉन है। तो ये आपका सही है। तो ये एक वीडियो है हमारा, इसको आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बाज़ाब्ता पल्सर के बारे में गैलेक्सी साइज ऑब्जर्वेटरी ये मैंने बनाया था आप लोगों के लिए ही, पीटी के लिए, और बड़ी खुशी की बात है जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, मेहनत लगा हमारा, काफ़ी टाइम लगा, और 2 साल से हम दे रहे हैं, मतलब 2 साल 2020 से मैंने कोशिश करी थी, लेकिन 2021 से रेगुलर मैंने दिया है, 2022 दिया और 2023 दिया। तो इन 3 सालों में जो मैंने आपको दिया है और उससे ये क्वेश्चन आ रहा है। शुरू में 5 क्वेश्चन आया था, पिछले बार 22 क्वेश्चन आया, इस बार 21 क्वेश्चन आया। तो आप ऑन एन एवरेज समझिए कि 50% क्वेश्चन हमारे टेस्ट से आ रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम आवर टेस्ट, बेसिकली दिस वीडियो सीरीज एंड टेस्ट एंड ब्लॉग सीरीज। सो you can watch this video, galaxy size observatory for gravitational waves. Let's see second.
Which one of the following country has own satellite navigation system? It means like GPS. Australia, Canada, Israel, Japan. So here answer is Japan. निम्नलिखित में से कौन जो है सो नेविगेशन सिस्टम जो है वो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, तो इसमें जापान। ठीक, आगे चलते हैं। Global Navigation Satellite System (GNSS) is the general term describing any satellite constellation that provides positioning, navigation, and timing. PNT. PNT means positioning, navigation, and timing. So services on global and regional basis. While GPS, as you know, is the most prevalent, and GPS, as you know, basically the US based, and prevalent. Other nations are feeding to have filled their own system and complementary PNT capability. These are the, as you know, GPS, United States, BIDAU or BDS, China, Galileo, European Union, GLONASS, Russian Federation, IRNS, NAVIC, India, QZZS, Japan. So that's Japan. तो इसमें हम देखेंगे जो पूरे दुनिया में 6 देश ऐसे हैं जिसके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, जिसमें जीपीएस अमेरिका के पास है, बिडाउ चाइना के पास है, गैलीलियो यूरोपीय यूनियन मिलाए हैं, तो 6 देश में मतलब एक यूरोपीय यूनियन को मान लेते हैं। तो ग्लोनोस जो है वो रशियन फेडरेशन का है, उसी तरह से नाविक और ये तो और क्यूएसएस जो है जापानी, और ये सारा चीज इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अपने वीडियो बता चुका हूँ, और ये 2021 के लिए बनाया था, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आज जो करंट अफेयर बता रहा हूँ वो 2023 में ही पूछेगा, वो 2024 में पूछेगा, 2025 में पूछेगा। तो इसीलिए इस बार जो मैंने वीडियो बनाया है उसको जाके आप लोग देखिए। अगर 2024 में आप लोग दे रहे हैं तो 2025 में दे रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो दिस वीडियो आर वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज वी प्रोवाइड all this information in our specific video. This video, see here. See, IRNSS, Worldwide Radio Navigation System. So where is the Worldwide Radio Navigation System, and what is IRNS, and what is the satellite system, and all that. We move forward and see another. Wabacha methods is sometimes talked about with the reference which one of the following? Controlling the viral disease spread by the mosquito, converting crop residues into the packaging material, producing biodegradable plastics, producing biochar from the thermochemical conservation of the biomass. So this is right. Wrong. It is viral disease spread by mosquito. So it is miraculous technique, basically first practiced in Indonesia. So we basically provide these information in our blog. See here. वही है वालबेचा पद्धति, जो कभी कभी किसी संदर्भ में तो मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों को, ये सही जवाब है इसका। तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया था, और ये बताया था मैंने अपने ब्लॉग पे। आप जाइए ब्लॉग पे, और ये कब बताया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे के आपको रखता हूँ, ताकि कोई भी आप चैलेंज कर दीजिए, आप जाके इसको मिला लीजिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मिला लीजिए, तो कोई इतना दवा के साथ नहीं कहेगा। बाकी आप तो देखा ही कि किस तरह से सब जल्दी आंसर दे दिया और गलत ही आंसर दिया। इनको पता भी नहीं होता कि कहाँ आंसर है। ठेके पे काम करवाते हैं मजदूर की तरह से। फैकल्टी तो कभी मेहनत भी नहीं करते। फैकल्टी आपके जो बड़े बड़े होते हैं वो अपना बस रखे रहते हैं, वो देखते हैं बस हो गया। तो इस हिसाब से आप सोचिए, जो टीचर आपके मेहनत कर रहे हो, हम कोशिश आपको कर रहे हैं, तो कम से कम आप हमारा इसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो फ्री में दे रहे हैं, और अगर उसमें कुछ चार्जेस भी है तो बहुत कम है। आप वहाँ 2.5 लाख दे के जाते हैं और वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, और यहाँ कुछ हज़ार हम चार्ज रखते हैं आपको। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये जो इंडोनेशिया का था, योगा कार्टा सिटी इंडोनेशिया, वहाँ डेंगू फीवर पे किया गया था, और इसमें मैराकुलस तरीके से 77%, 77% drastically basically cut from this type of the dengue. So see here, see
See, this is our blog, Civil Services with ZAKI, and we published this news on 11th June 2021. Remember, the heading is, if you see, miraculous mosquito hack and dengue. What is the miraculous mosquito hack technique? And basically this technique is Volvicha technique. So see here, Volvicha Aedes aegypti mosquito. See here, this is technique. If you go, so we provide, see, Volvicha bacteria with the seeds. So we provide the most comprehensive thing for basically your civil services examination in a short way. So, and that's why we provide animation and all that, so you can easily understand all this. So see here, and you can click the link and you can check this authenticity of this news. So that's all. 21 question directly from. So we will meet in the next video with the second with 23 other question which is not provided or outside from our test series or our civil services ZAKI material. So it's total 18 in geography, ecology, environment 18, in 8 science and technology, total 44 question. So in the total direct question from civil services 21, 12 geography we discussed, and ecology and environment 5, and science tech 4. So this year 21 questions. So I hope you understand 21 question is also very enough for you can qualify a PT. So I hope as you result also out recent some 1 2 day before earlier. So I hope you also preparing for the mains examination. So we also provide you the mains test series free of cost, weekly test series, so you can also join our weekly. So thanks for watching this video. थैंक्स ए लॉट. तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे इसी का दूसरा भाग में. तो दूसरा भाग देखना ना भूलिएगा, उसमें आपको टोटल 44 क्वेश्चन, यानी 21 यहाँ हो गया और 23 वहाँ से हो गया, तो ये टोटल 44 क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू न्यू, देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड colleagues. Thanks for watching this video. Thanks a lot.